हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ के क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की यूनिट 5 के। ठीक है, तो आज बात करेंगे डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस टू द लोएस्ट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर द प्रॉब्लम्स अराइज। फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन implies reservation of authority, that is power to plan, organize, direct and control bracket with the top level management and transfer rest of the authority to lower levels in the organization. उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू लुइस ए एलन, डिसेंट्रलाइजेशन refers to the systematic effort to delegate to the lowest levels of all authority except which can only be exercised at central points. उसके बाद देखिए 2016 एंड 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, रिड्यूस बर्डन टू द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1, रिड्यूस बर्डन ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स। In the process of decentralization, top level managers are overburdened with the authority and responsibility as they systematically pass the authority responsibilities at different levels and they become free to concentrate on core and important issues. नेक्स्ट देखिए, नंबर 2, क्विक डिसीजंस। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, डिसीजन मेकिंग पावर्स आर डेलीगेटेड टू द लेवल्स ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूशन। फर्स्ट ऑफ, व्हेनेवर देयर इज a need taking a decision, the concerned executive will decide the things immediately. First, there is no need to make reference to the top level for the most of the work. First, it quickens the process of decision making. और हाँ, बता दूं, अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। सारे के सारे पीडीएफ मैं आपको वेरी रीजनेबल रेट में शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ग्रांट मोर autonomy or freedom to lower level. First of, this helps the subordinates to do the work in the manner best suited for their department. First of, when each department is going to do their best, then productivity increases and it will generate more revenue which can be used for expansion and diversification. उसके बाद देखिए, नंबर 3, सेंस ऑफ कंपटीशन। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स आर मेड सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। फर्स्ट, एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विल compete with each other to show better results. First, the sense of competition will improve the performance of all departments or segments. उसके बाद देखिए, डिवीजन ऑफ रिस्क। द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड into number of departments under decentralization. First, management can experiment new ideas at one department without disturbing others. First, this will reduce risk if things go adverse. First, once the experiment is successful, it can be used in other segments as also. उसके बाद देखिए, effective control and supervision. With the delegation of authority, span of control will be effective. First, since executives at lower level have the full authority to make important decisions, they will be recommended awards and punishments as their performance. First, this will improve supervision and control. उसके बाद देखिए, motivation of personnel. Decentralization is a means of empowerment of the lower levels. First, the employees at the lower levels who have power to decide, take decisions, enjoy psychological satisfaction and feel motivated. उसके बाद देखिए, initiative and creativity. When employees are given greater degree of autonomy or authority, the subordinates get an opportunity to take initiative. First, they come out with innovative ideas for the benefit of the organization. Thus, decentralization facilitates creativity in the organization. तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि किसी वीडियो से आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूंगा।